Good morning, student. I am Sunita Sharma, your economics teacher. Today we will do economics, economy and its central problems of the an economy. What economics is? What about microeconomics and macroeconomics? Economy and its type: market, central, planned, and mixed economy. Central problem क्या है? What, how, and for whom to produce. Production possibility curve, PPC curve, production possibility curve, resources allocation, production possibility curve, macroeconomics, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है 2-3 बार आया है एग्जाम में, एस्टेट में भी, KVS में भी, NVS में भी. तो दो स्टूडेंट हु वांट्स टू प्रिपरेशन फॉर KVS, NVS, DSSB एंड CA फाउंडेशंस, दे कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट्स सी. देखते हैं व्हाट इकोनॉमिक्स इज़ अबाउट. ठीक है, ये economics come into picture that movement itself interest to relate to material benefit or welfare. ठीक है, definition देखिएगा. Economics is a subject matter that study different economic activities that directed towards the maximization of satisfaction and maximization of profit and level of an individual and maximizations of social welfare at level of the country or as a whole. Okay, this is definition of economy. Okay, next point comes scarcity of resources and the problem of choice. You know about that. What is scarcity? And scarcity resources are scarce in relations to their wants. ठीक है, alternative use resources have alternative use, like or example, land may be used to grow wheat or rice may be used to for the construction of building. Okay, that's the definition of scarcity. It is a situation when demand for a good exceed its supply even at a zero price. Okay, economic problem. Resources are scarce and resources can be allocated to be alternate use. Next point it comes micro and macroeconomics. Micro means small, macro means large. When economic problem or economic issues are studied, consider small economic units like an individual. फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है एग्जाम के लिए, नोट कर लेगा. Consider small economic units like an individual consumers or an individual producers. We are referring to a microeconomics. Microeconomics means it's small level study. Okay, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा. नेक्स्ट पॉइंट कम्स मैक्रोइकोनॉमिक्स. Macroeconomic studies about activities related to economy as a whole. For example, studies aggregate demand for all goods and services in the economy. Next point comes economy is a system spread over a particular and that reveals the nature and level of economic activities in that area. It shows how two people of the concerned area earn their living. Market economy, central planned economy and mixed economy. Next point comes central problems of an economy. What is the central problem? What to produce, how to produce, and whom to produce. That's three problems are central problems. What to produce, first points, it will be what to produce. It is standard knowledge resources are scarce in the relations to human needs. We cannot produce all goods and much as we wish to produce. Allocation of resources and consequent problem of choice requires that we decide what to produce and what not. We have to decide which wants are to be taken or priority and which ones can wait. It involves twofold decision. Okay, next point comes how to produce. How to produce is second offshoot to the problem of resources allocations. Okay, labor intensive technique, capital intensive technique. That's a type of technique. For whom to produce. Okay, the first accept related to personal distribution and the second related to functional distributions. Okay, multinational corporate producing in India and why. Production MNC means multinational corporation product driven by the profit motive. Accordingly, these corporations are producing goods for the relatively richer section of the society. As a result, and gulf between the quality of life rich and poor in is wondering. Next point, it will be very important point, production's possibility curve.
That's a very important point. Production possibility curve, boundary of production possibility frontier. Economics also call it transformation line, transformation curve. That's a very important question. Underline this line, transformation line or transformation curve. इसका second name है. We can show through the help of diagram. Production possibility curve, transformation curve. Production possibility curve shows the two things: wheat and rice, the combinations, and production possibility line frontier AE. Okay, this name is given by AE curve, which shows the production's possibility curve is drawn at the assumptions that given resources are fully efficient utilized and technology remains constant. Okay. Next first point है shifting rotation of production facility curve, change in resources. Okay, resources are increased, we can produce more of both the goods. Accordingly, PPC shift to right curve. Okay, B से B1, A से A1 when resources are increased. Next, when resources are reduced means reduced resources are reduced, we can produce less of both the goods. Accordingly, PPC shift to the left. Okay, given resources when resources are reduced, B से B1, A से A1 लेफ्ट साइड में रिड्यूस होगा. दैट्स अ चेंज इन टेक्नोलॉजी. एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्स कमोडिटी. एक्स कमोडिटी की हम टेक्नोलॉजी चेंज करते हैं तो एक्स कमोडिटी का प्रोडक्शन जो है बी से B1 हो जाता है, ए का कॉन्स्टेंट रहता है. नेक्स्ट पॉइंट है एफिशिएंट टेक्नोलॉजी द प्रोडक्शन ऑफ वाई टेक्नोलॉजी. जब हम वाई टेक्नोलॉजी के लिए चेंज करते हैं, दिस शो बाय डायग्राम एंड बी कॉन्स्टेंट रिमेन कॉन्स्टेंट बट वाई कमोडिटी चेंज ए से A1. ओके, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ एक्स एंड वाई. जब हम एक्स और वाई बोथ के लिए इंक्रीज करते हैं तो एफिशिएंट टेक्नोलॉजी बी से B1, ए से A1 दोनों का कर्व जो है चेंज हो जाता है. Next point, it will be marginal opportunity cost. Marginal opportunity cost, the rate at which output use one lost of every additional and unit of output is used to. इसका सेकंड चैप्टर में marginal opportunity cost मैंने बहुत ही डीपली करवाया हुआ है विद डायग्राम, विद एग्जाम्पल, विद टेबल. ठीक है, तो आप मेरे चैनल पर जाइएगा, इकोनॉमिक्स विद सुनीता शर्मा. आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और आप पूरा चैप्टर जो है देख सकते हैं. इंग्लिश मीडियम एंड इन हिंदी मीडियम दोनों लैंग्वेज में मैंने करवाया हुआ है. लेट्स सी चेंज क्यों हुआ एंड चेंज क्यों टू मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ओके, लेट्स सी थ्रू द डायग्राम. ओके, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लॉस ऑफ आउटपुट एंड गेन ऑफ आउटपुट, K1 LL1 AB ABC. इसको हम डायग्राम के थ्रू देखिएगा. ये देखिए ए बी, दिस इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी कर्व, मार्जिन अपॉर्चुनिटी कर्व. देखो, लॉस ऑफ आउटपुट यूज 1 पर यूनिट ऑफ द गेन ऑफ आउटपुट यूज 2 एंड द व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्ट फ्रॉम यूज टू 1 एंड यूज 2. ठीक है, दिस इज गेन पॉइंट. ओके, एल से L1, के से K1, दिस इज लॉस पॉइंट, चेंज वाई एंड चेंज एक्स. ठीक है, यूज 1 एंड यूज 2. दिस इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. With the help of table, this is wheat, this is cloth. Okay, and marginal opportunity, how to find this difference is 0 to 0, 90 and 100. This difference between 10 points and 25, 0 minus 25, so it will be 0.4. Okay, दैट्स अ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोस्ट. इस जो इसका डिफरेंस है, जो इसका डिफरेंस है, दोनों का लेकर चलेंगे. ठीक है, चेंज वाई और चेंज यानी कि चेंज वीट और चेंज क्लोथ, दोनों में जो चेंज हुआ है उसको लेकर चलेंगे. 0.8 सेकेंड का रहेगा, 1.2 थर्ड का रहेगा और 3 हमारा फोर्थ का रहेगा एंड 5 हमारा फिफ्थ का उसका रहेगा. ठीक है, चेंज वाई एंड चेंज वीट एंड चेंज क्लोथ, इसमें से आप एक्स वाई भी मान सकते हो. तो जो चेंज होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है, marginal opportunity cost tend to the rise and resources are shipped from wheat to cloth. Initially, wheat, when 25 meter of cloth produce 10 kg of wheat, it will be sacrificed for the next 25 meter of cloth. 20 kg of wheat is to be sacrificed as on. ठीक है, with the
हेल्प ऑफ डायग्राम आप यू कैन सी देख सकते हैं। ओके, ये आपका वेट है, ये आपका रहेगा क्लॉथ मीटर में रहेगा, वेट केजी में रहेगा। कंप्लीटेड दिस चैप्टर एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से इकोनॉमिक्स को करना चाहते हैं वो मेरे चैनल पर आइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड स्टडी कीजिएगा। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट।